there are two small terms in the supply chapters, theories of supply, right? First one is joint supply and second one is composite supply. As we had discussed in the demand, right, that one is joint demand and another one is composite demand, right? In the same way, joint supply and composite supply, right? Joint supply means joint. The two products are associated. Two products are joint, right? कि एक के होने से दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, राइट? प्रोडक्ट उसमें हमको उसको वेरिएट अलग से बनाना नहीं पड़ता है, राइट? जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया था, तो जो लास्ट में जो कॉल बनता है, एस्टन बचता है, वो जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है, राइट? वो नेचुरली हमें मिल जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इन द सेम वे अगर हम मिल्क के प्रोसेस करने के बाद अगर हम उसमें से मलाई जो है वो बाय प्रोडक्ट वो नेचुरली हमें मिलती है, राइट? तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, राइट? सो समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एक मेन प्रोडक्ट के प्राइस की इंक्रीज होने की वजह से बाय प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, राइट? तो ये चीज इसमें अफेक्ट करती है कि अगर मेन चीज का प्रोडक्ट का सप्लाई जो है वो कम या ज्यादा होता है, तो इस वजह से बाय प्रोडक्ट का सप्लाई भी कम और ज्यादा हो सकता है, राइट? तो ये चीज यहाँ पे कहना चाहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट जिसमें मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों जुड़े हुए हैं, जॉइंट है, एसोसिएटेड है, राइट? इफ द सप्लाई ऑफ मेन प्रोडक्ट विल अफेक्ट and if the supply of main product will increase or decrease, the similarly in the same way the byproduct supply will affect and it will increase or decrease, right? Okay, the second one is composite supply. Composite supply means we do have so many alternatives, right? अगर आज मुझे प्यास लगती है या मुझे कुछ ठंडा पीना है, तो ठंडा मतलब कोका कोला ही ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? मेरे पास so many I have so many alternatives. मैं कोका कोला भी पी सकता हूँ, थम्स अप भी पी सकता हूँ, स्प्राइट है, मिरिंडा है, राइट? नींबू पानी भी है, राइट? I do have so many alternatives, राइट? उसमें से मैं कोई भी पिक करके उसको मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ, राइट? So this factor can affect if the price of a product, if the price of a product is high, then supply of that product, particular product will be high. Yes or no? Yes, right? Then I will get only that product from the market. मुझे वही प्रोडक्ट मार्केट से मिलेगी जो जिसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, जिसकी सप्लाई ज्यादा है, राइट? तो ये चीज यहाँ पे समझनी है कि जो भी प्रोडक्ट की सप्लाई में चेंजेस होगा उस तरीके से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे थम्स अप पीनी है लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे स्प्राइट से काम चलाना पड़ेगा, राइट? मुझे चाहिए कुछ ना कुछ, वो तो जरूरी है, राइट? तो ये कंपोजिट सप्लाई है, राइट? ये कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट है that we do have so many substitutes in the same way. In the same way कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कैपिटल इंटेंसिव बनाए या लेबर इंटेंसिव बनाए, या तो मशीनरी से प्रोडक्शन करे या लेबर थ्रू प्रोडक्शन करे। तो जो उसको चीप लगेगा उसके साथ वो जाएगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो डिसाइड होगी और सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, राइट? तो ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई, और दूसरा है जॉइंट सप्लाई, right? Okay. Students, now we are going to understand the most important thing in economics, right? ये सबसे ज्यादा important चीज है इकोनॉमिक के अंदर, वो अब हम समझने के लिए जा रहे हैं, right? The topic is elasticity, right? Elasticity of demand and supply, right? Okay. सबसे पहले सप्लाई का जो चैप्टर खत्म होता है उसमें लास्ट पार्ट में दिया है, थोड़ा सा ही पार्ट है वो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा अलग से चैप्टर आता है, चैप्टर डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझेंगे,
right? But before that we need to understand that what is elasticity. इलास्टिसिटी क्या है वो हमें पहले समझना है, राइट? ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, इलास्टिसिटी के अंदर दो अलग अलग चीज आती है, दो अलग अलग पार्ट आते हैं, दो अलग वेरिएबल्स आते हैं, राइट? फर्स्ट वन इज इलास्टिक एंड अनदर वन इज इनइलास्टिक, राइट? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, राइट? आगे और भी चीजें आती हैं, वो तब हम समझेंगे कि क्या है वो। बट इन दिस सप्लाई थियरी ऑफ सप्लाई चैप्टर्स, राइट, particular only two terms are there. The first one is elastic, second one is inelastic, right? Okay, so first of all we will understand the meaning of elasticity. So students, generally elasticity means it describes the change, right? The flexibility, the change. कोई भी चीज में कुछ भी परिवर्तन आता है, right? It shows that it's elasticity, right? It's flexible, it's change in general term, in terms of dictionary, right? Okay, now we will understand the economic meaning of elasticity, right? Elasticity is a measurement of percentage change of one economic variable in response to change in another. Elasticity क्या है? मेजरमेंट मीन्स एक मापदंड है कि एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं, राइट? कि हमने देखा कि से फॉर एग्जांपल प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, राइट? ओके, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज आता है, राइट? इन द सेम वे अगर ये इलास्टिसिटी का चैप्टर है क्यों आखिर, राइट? तो हमें अगर देखना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है, दैट इज ओके, हम समझ गए। प्राइस में चेंज आता है, सप्लाई में चेंज आता है, पर कितना चेंज आता है, राइट? वी नीड टू मेजर, हमें वो आंकना है, वो मापना है कि कितना चेंज आता है। वो अगर समझना है तो उसके लिए ये चैप्टर है, उसके लिए इलास्टिसिटी है, राइट? तो उसके लिए ये दो वर्ड है, इलास्टिक वेरिएबल, इनइलास्टिक वेरिएबल, राइट? ओके, हम देखते हैं क्या है ये इलास्टिक वेरिएबल। इट इज वन व्हिच रिस्पोंड मोर देन प्रोपोर्शनली टू चेंज इन अदर वेरिएबल। एक वर्ड आता है मोर देन, ग्रेटर देन। सपोज डिमांड में सपोज प्राइस में चेंज आता है, राइट? जो प्राइस एक वेरिएबल है, सिमिलरली डिमांड दूसरा वेरिएबल है, सप्लाई भी एक वेरिएबल है, राइट? तो से फॉर एग्जांपल प्राइस में चेंज आता है, उससे ज्यादा चेंज सप्लाई में आता है, then it is a elastic variable, right? More than, greater than, right? It's greater than 1. ये आगे जाके और चीज आएगी, राइट? तब हम और डीप में समझेंगे, राइट? तो अगर किसी एक वेरिएबल में जो चेंज आता है उससे ज्यादा चेंज दूसरे वेरिएबल में आता है, then it is a elastic variable, right? Please student note this point and understand one, because ये जो चीज है इलास्टिसिटी, इलास्टिक वेरिएबल, इनइलास्टिक वेरिएबल, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ये थियरीज ऑफ सप्लाई की बुक में नहीं दिया गया है। दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये एक बना के लिखा हुआ है, राइट? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, नॉट दिस वन आल्सो, राइट? ओके, देन सेकंड वन इज inelastic variable, right? It is one which changes less than proportionally change in response to change in other variable, right? Less than, the first one elastic one is more than or greater than, it is a less than, right? प्राइस में जितना चेंज आता है
उसके प्रोपोर्शन में सप्लाई में कम चेंज आता है, राइट, कम चेंज आता है तो उसको कहते हैं इनइलास्टिक वेरिएबल, राइट, इनइलास्टिक वेरिएबल। इलास्टिक वेरिएबल में एक वेरिएबल में जो चेंज आता है उससे ज्यादा चेंज आता है दूसरे वेरिएबल में, तो उसको इलास्टिक वेरिएबल बोलते हैं, राइट। इन इलास्टिक वेरिएबल में एक वेरिएबल में जो चेंज आता है उससे कम चेंज आता है, चेंज आता है लेकिन कम आता है, राइट, तो उसको इन इलास्टिक वेरिएबल बोलते हैं, राइट। ओके, तो अब हम ये चीज को डीप में समझेंगे, राइट, with some examples, right। उसमें हम सप्लाई की चीजें लेंगे, डिमांड की जो फैक्टर है, डिमांड की जो चीजें हैं, डिमांड टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। ये चैप्टर सप्लाई का अभी चालू है तो उसमें हम पहले सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, राइट। ओके। Elasticity is a measure of a variable's reaction to a change in another variable. It can describe the extent to which the supply or demand for a good or service changes with the price of goods or consumer income. We calculate elasticity with the following. A result greater than or equal to 1 means that a good or service is elastic. Less than 1 means that the good or service is inelastic. Necessities such as milk and gasoline usually have low elasticity. This is because it takes a meaningful change in price or consumer income to change the amount demanded. Luxury goods such as high-end vehicles and electronics are said to have high elasticity. This is because a small change in the price of these items can lead to a big change in demand from both consumers and producers. In a stagnant economy in which consumers have a limited amount of income to spend, demand is more sensitive to price and thus elasticity is greater. When an item has many possible substitutes, its demand will be more elastic. For example, if the price of cookies increased dramatically, consumers could easily substitute candy or ice cream to satisfy their desire for sweets. On the other hand, when an item has few substitutes, like gasoline, its demand will be less elastic, since many consumers will still buy it regardless of the price. The law of supply is one of the most fundamental principles in microeconomics. According to the law of supply, for all other things remaining constant, the higher the price of a good or service, the higher the supply. Producers want to produce more of that good or service at the higher price to increase profits. Conversely, the lower the price, the lower the supply. If you were to graph this relationship with the quantity supplied on the x-axis and the price on the y-axis, the relationship between price and supply is graphed as an upward-sloping curve from left to right. This line is referred to as a supply curve. Movement along the supply curve is referred to as supply expanding or contracting as price changes. Westlia Corp produces electric cars. At a price of $20,000, Westlia produces 5,000 cars. If the price increases to $25,000, Westlia will produce 6,000 electric cars. The higher price induces them to build more cars. The law of supply is a theoretical concept. In real life, variables do not remain constant. Things other than price can affect supply, such as prices of related goods, availability, and price of raw materials. Assume Westlia builds a new, more efficient factory. It is now able to produce 6,000 electric cars at the $20,000 price. The supply curve shifts down and to the right. The quantity supplied changed because of an external factor instead of a change in price. The field of economics is often broken down into two broad categories: microeconomics and macroeconomics. Remember, the goal of all economics is to analyze the production and consumption of finite resources, be they oil, wheat, capital, or even labor. Microeconomics observes these issues from an individual or business perspective.
Say Carl owns a supermarket and has to price each item in his store. Each price will be influenced by his competitor's pricing. He also makes choices about the wages and benefits to offer his employees, which depend on the number of qualified workers in the area. Because he's applying the rules of supply and demand to his individual business, he's using microeconomics, also known as a bottom-up approach to economics. Macroeconomics looks at the issues from the perspective of the country as a whole and the policies affecting the economy. For instance, Sharon, like Carl, is interested in the supply and demand for labor, but for a different reason. She's a policy advisor for the federal government. If Sharon evaluates how a change in tax laws will affect the unemployment rate across the entire country, she'll be engaging in macroeconomics. Macroeconomics looks at entire industries or economies, which is why it's referred to as a top-down approach. While both are often taught separately, there's plenty of overlap. For instance, at a macro level, if a new federal law makes it more attractive for people to work, it will have broad implications, such as lowering the country's unemployment rate. At a micro level, Carl may be forced to increase wages if he wants to attract more workers. Ultimately, a strong